Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju has submitted a report on Waqf in a written reply to the Parliament. He claims that Waqf owns about 8,72,352 properties, out of which 994 are illegal and encroached upon. This comes in a big revelation by Kiren Rijiju over the Waqf cause. He also said that the central government's goal is to manage Waqf property with transparency and accountability. We have Riyanka joining us live on the story to get us more details. Riyanka, tell us about what is the announcement that will be made from the side of the Union Minister Kiren Rijiju. In fact, he has also submitted a written reply to the Parliament where he said that the Union government will take accountability and responsibility of managing Waqf properties. Give us more on the story. Well, what we are getting to know at this point in time that there has been an information given by the centre. A total of 994 Waqf properties have been reported as alienated or illegally encroached upon across the country, with Tamil Nadu in itself having counted to maximum of around 734 such Waqf properties. And this is what the Union government has informed the Parliament. Well, in a written response to a set of questions from the CPIM, the Ministry of Minority Affairs have also informed that the country has around 8,72,352 immovable and 16,717 movable Waqf properties registered under the Waqf Act, citing that this information is available on the Waqf Asset Management System of India. Now, what we're also getting to know that these immovable or illegal properties refer to the Waqf land or the assets that have been transferred to or encroached upon through unlawful means. So, at this point in time, what we are getting to know that when it comes to the Waqf properties, this is what the information that has been given by the Union government. Viewers, in another big breaking news, the Trinamool Congress MLA Humayun Kabir has announced that a new Babri Masjid will be built in West Bengal. The Babri Masjid will be built in West Bengal. Humayun Kabir has announced that the construction work of the Babri Masjid at Beldanga will start before the 6th of December 2025. In a bold declaration, Humayun Kabir, the Trinamool Congress MLA, has said that a new Babri Masjid will be made in West Bengal. Listen to this. যাতে 2025 সালের 6 ডিসেম্বর তার আগেই ট্রাস্টি তৈরি করে ট্রাস্টি যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন তেনারা জমি ক্রয় করবেন বা চয়েস করবেন বা কোন জায়গাতে করা যায় সেটা ঠিক করার পর আমরা মোটামুটিভাবে বাবরি মসজিদ নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য 6 ডিসেম্বর 2025 সালে আমরা এটা শুরু করব। 3 বছর 4 বছর 5 বছর যা টাইম লাগুক এই টাইমের মধ্যে একটা বাংলার মুসলিমদের ভাবাবে। तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने बोला है कि वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे पश्चिम बंगाल में। ये बाबरी मस्जिद नहीं, ये बाबरी सोच की बात है। हुमायूं कबीर ने इससे पहले कहा था कि वो हिंदुओं को, भाजपा के समर्थकों को काटकर भगीरथ में फेंक देंगे। अब वो कह रहे हैं कि वो उसी सोच को, बाबरी सोच को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हिंदुओं पर हमला, हिंदुओं की आस्था पर हमला, हिंदुओं के धर्मस्थल पर हमला करेंगे और हिंदुओं को लगातार अपमानित करने का जो भाव है उसको अपनाएंगे। इसीलिए आज जब संभल की चर्चा चल रही है और संभल में सबको पता है कि बाबर ने वहां पर हरिहर मंदिर तोड़कर वहां पर एक तथाकथित मस्जिद बनाई, आज यही संदेश हुमायूं कबीर और टीएमसी देना चाहते हैं कि वो इस प्रकार की आक्रांता मानसिकता के साथ है, क्योंकि वोट बैंक जरूरी है। वोट बैंक के नाम पर हिंदू आस्था पर करो चोट, हिंदुओं पर करो चोट, आक्रांताओं के साथ खड़े हो जाओ, आक्रांताओं का महिमा मंडन करो और इस प्रकार की सोच को बढ़ावा दो। ये हुमायूं कबीर संदेश दे रहे हैं।